Why global development failed to prevent wars? The contemporary world has witnessed new heights of economic growth, technological advancement, and global integration. However, the development process has failed to insulate the world from conflicts due to regression of global institutions, geo-economic competition, technological warfare, and the prevailing mentality of security dilemma. अब आपकी सबसे अच्छी तीसरी स्टेटमेंट ये थी कि आप ये कुछ भी ना लिखते, कटिंग करें। अब अपनी तीसरी स्टेटमेंट देखिए। द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ फेल्ड to insulate the world from conflicts due to regression of global institutions, geo-economic competition, technological warfare, and prevailing security dilemma. अब आप मुझे बताइए आपका ये आंसर होता है टॉपिक वाई ग्लोबल डेवलपमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रिवेंट वॉर्स. ग्लोबल डेवलपमेंट process has failed to insulate the world from conflicts due to regression of global institutions. Global institution regress हो गए हैं, जियो इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर. अब ये वाला जो फ्रेजिंग है ये इतनी रेलिवेंट नहीं लग रही, इसको थोड़ा ऐसा रिफ्रेज करें, ठीक है. मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कर लें. और प्रिवेलिंग सिक्योरिटी डिलेमा या इंक्रीजिंग सिक्योरिटी डिलेमा ड्यू टू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यूँ कर लीजिए. फिर वो डायरेक्टली आपका जो टॉपिक है वो एड्रेस हो जाएगा. वो ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे में तो ठीक है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट में इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक. आप डायरेक्टली उसके सवाल का जवाब दें. ये वजूहत हैं जी जिनकी वजह से नहीं हो रहा. बिल्कुल डायरेक्ट. एन ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट इन द पोस्ट. ये पॉइंट आपका ठीक नहीं है. डोंट लिमिट इट. अगर उसने लिमिट नहीं किया तो आप भी लिमिट ना करें. हाँ ठीक है, आपके गिव अप का कुछ अच्छे हैं. Rationales behind the failure of global development to prevent wars. Rationale behind the failure of global development to prevent war. The flaws of global governance system due to hegemonic designs. Globalization highlighting differences leading to populism and xenophobia. Economic nationalism accelerated. Economic nationalism by geo-economic competition, the failure of promises of modernization and dependency theory, selective implementation of international laws and regulations, global emergency of governance, and the race to fuel the engine of development process. इस पॉइंट को थोड़ा और डायरेक्ट लिखें, थोड़ा सा वेग है, केस स्टडी से थोड़ा सा वाज़ेह हो रहा है. डिप्लोमेसी टेकिंग अ बैक सीट इन इंटरनेशनल रिलेशंस. Mismatch between economic growth and human development resulting in social injustice is very nice. Technological development leading to sophisticated arms development race. Very nice. Mistrust and the prevailing mentality of zero-sum game. वेरी गुड डिवीजन. आपका मेजॉरिटी एसएससी पर होना चाहिए था. ठीक है, तीन पॉइंट ठीक है. हैवी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक losses, backslide in global development trajectory, the reducing space for cooperation on global issues, synergizing global development with global peace, equitable global development process to create an environment of revitalization of global institutions, provision of justice to the aggressor. In today's world, humans have reached to the heights of speech. टू लिखने की ज़रूरत नहीं है. Have reached the skies
मज़ा नहीं आया ओपनिंग सेंटेंस का। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव मेड अ प्रोग्रेस ऑफ economic indicators and technological advancement have made इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने किस तरह, ये इससे क्या लेना देना? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसको छोड़ दें, अगर इस सब्जेक्ट का इस सेंटेंस से क्या लेना देना? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव मेड अ प्रोग्रेस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड लेवल, नहीं ना, इट डज नॉट मेक एनी, ये सेंटेंस भी मज़े का नहीं है। हाउएवर, अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, दे ऑल्सो मेक सेंस, लेकिन अच्छे नहीं हैं। हाउएवर, डिस्पाइट ट्रिमेंडस डेवलपमेंट, humans' intellect and common sense have not grown to the extent to cooperate on global peace. Again, बहुत sweeping statement है, ऐसी बात भी नहीं है। The development process alone has failed to protect the world from wars. Yes, ये अच्छी line है। There are a myriad of reasons behind this paradox. Okay. The global governance structure is still dominated by few powers to maintain their hegemonic status quo, and globalization has magnified humans' differences to the extent of hatred. Very nice. Economic nationalism. Furthermore, economic nationalism, the failure of promises of modernity theories, and selective implementation of international laws add fuel to the fire of global conflict. ठीक है। एक तो आप इस टॉपिक पे थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च करेंगे। आपने ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। ग्लोबल डेवलपमेंट है क्या? ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट जो है वो यूएस एड है, यूनाइटेड स्टेट्स एड एजेंसी है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID है यूके का, GIZ है जर्मनी का, स्विट्ज़रलैंड के इंस्टीट्यूशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, दैट हैज़ फेल्ड टू प्रिवेंट वॉर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मज़ीद रिसर्च करें, डेवलपमेंट क्यों नहीं वॉर को प्रिवेंट कर सकी। मिसाल के तौर पे अगर पैलेस्टाइन वॉर है तो UN जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो काम क्यों नहीं कर रही, उसकी वीकनेसेस पे बात करें। ठीक है, रशिया यूक्रेन की अगर वॉर हो रही है, वाई द यूरोपियन यूनियन और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। और अगर जंग हो रही है सीरिया में, यमन में, तो यहाँ पे जो अरब वर्ल्ड है या GCC है, वाई दे हैव फेल्ड टू कंट्रोल दोज वॉर्स। अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में कश्मीर का रोला है तो वर्ल्ड बैंक इतनी इनफेक्टिव क्यों है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इतना इनफेक्टिव क्यों है। ठीक है, सो इस टॉपिक को थोड़ा उस डायमेंशन में लीजिए, ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। ग्लोबल डेवलपमेंट इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग, तो इस पर आप थोड़ी मज़ीद रिसर्च करेंगे। और एक और आपका कंसिस्टेंट रोला जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपके ऐसे देखें ना, यहाँ से बहुत मज़े का ऐसे यहाँ से, लेकिन ये जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि यहाँ से इससे पहले से भी ठीक है। यहाँ से द डेवलपमेंट प्रोसेस अलोन हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर्स, यहाँ से ठीक है, लेकिन ये पीस से लेके यहाँ तक ये मज़े का नहीं है। ये इनिशियल स्टेटमेंट्स पे आप काम करें, आप किस तरह इसको लेके चलना चाहते हैं, इस पे थोड़ी आप प्रैक्टिस करें। उसकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा, थोड़ा सा उसमें डिटेल में काम करेंगे, फिर आपको समझ आएगी।